Hello everyone. Today we will discuss one important genre of fungi, that is Phytophthora. Our today's learning objectives are we will discuss about habitat कि कहाँ पे ये जीनस ग्रो करता है, इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोड्यूस करता है ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लामाइडोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें दैट इज oogamous टाइप, और जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दैट विल डिस्कस अबाउट दिस लाइफ साइकिल। मेरा नाम है लोमेश्वर। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसका जो डोमेन है दैट इज़ हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ यूकैरिया। किंगडम इज़ फंजाई, वी कैन से देन फाइलम और डिवीजन इज़ ओमाइकोटा। क्लास है इसकी ओमाइसिटीज। ऑर्डर इज़ पेरोनोस्पोरेल्स, फैमिली पाइथियेसी। जीनस इज़ फाइटोप्थोरा एंड स्पीशीज इज़ इन्फेस्टेंस। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव वन एनिमेशन। एक एनिमेशन है जो एक ओवरव्यू बताता है इस जीनस के बारे में। सो प्लीज़ look for that animation carefully, and after that we will discuss it in detail. Late blight of potato, caused by the oomycete Phytophthora infestans, is one of the most serious diseases affecting potato crops worldwide. The primary symptoms of Phytophthora infestans infection are brown lesions at the base of the stem, in the leaf axils, and on the leaves. In humid weather, this damage spreads rapidly. On the underside of the leaves, a typical whitish growth of the pathogen can be seen. It consists of a dense aggregation of branched hyphae, sporangiophores, bearing lemon-shaped sporangia, the reproductive organs of Phytophthora infestans. When picked up by the wind, countless sporangia are spread throughout the crop and far beyond it. Sporangia that land on a potato leaf when the weather is damp and warm often germinate by forming a germ tube. This process is called direct germination. At lower temperatures, indirect germination prevails. Motile zoospores are released. After attaching to the leaf surface, they transform into roundish cysts. The cysts germinate by forming a germ tube. From its tip, an infection hypha enters the interior of the leaf. A mycelium forms. Its hyphae spread between the leaf cells. With the help of finger-like haustoria, the parasite draws nutrients from the cells of its host plant. The damaged cells die off, and the mycelium spreads further into neighboring leaf tissue that is still alive. Thus, green leaf area is increasingly lost. From hyphae on the edge of the damaged leaf tissue, sporangiophores develop, growing out of the leaf through stomata, bearing a new generation of sporangia ready to be spread by wind or rain. This cycle of sporangial dissemination, release of zoospores, infection of a host plant, mycelium formation in the leaf, and sporulation can continue repeating, especially if weather conditions are moist. Infection pressure increases exponentially, and more plants show the typical late blight symptoms. The damaged leaf area increases rapidly from day to day. Often the stems with dead leaves hanging from them are all that remain. The tubers remain small, but the risk of yield loss is far higher if sporangia are washed into the soil by rain. The zoospores released from the sporangia move between the soil particles and thus reach the surface of the tubers. They often infect the tubers through natural openings in their skin. In storage, tubers infected by Phytophthora infestans are recognized by irregular blue-gray spots on their surfaces. With time, these spots sink in slightly. Often, infected tubers are additionally colonized by soft rot bacteria.
So first we will discuss about its habitat. अगर इसकी etiology की बात करते हैं, जो इसका नाम है that is taken from Greek word phyton which means plant, और phthora का मतलब होता है destruction. So ये plants को destroy करता है, ऐसा genus है ये. इसकी लगभग 100 species हैं. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. हर जगह पाया जाता है ये, जहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल होती हैं इसकी ग्रोथ के लिए. इसकी कुछ एक स्पीशीज़ होती हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. इट मीन्स दे आर बेसिकली saprophytes but under certain conditions they can behave as parasite. Then next is facultative saprophyte. It means they are parasites but under certain conditions they can feed on that decaying organic matter. जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है ये कॉज करता है एक डिजीज़ पोटैटो में, उसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और पोटैटो ब्लाइट भी कहा जाता है. ब्लाइट का मतलब होता है बर्निंग सिम्टम. दैट विल सी इन दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर दिस इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट. इसमें हम जो ये ब्लैक कलर के सिम्टम्स देख सकते हैं, दीज आर सिमिलर टू द बर्निंग सिम्टम्स. सो इसलिए इसको ब्लाइट भी कहा जाता है. इट इज़ इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. It shows symptom in the underground part, that is tuber of that potato. So in this picture we can see this patches of dark brownish color patches that we can see in the tuber. So this is the symptom of late blight of potato. ये जो genus है, it is responsible for famous Irish Potato Famine during the year 1843 to 1846 in Ireland. इस जीनस की, इस फंगल जीनस की वजह से आयरलैंड में पोटैटो जो क्रॉप है, दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ फूड, वी कैन से द स्टेपल डाइट ऑफ द आयरिश पीपल एट दैट टाइम. सो ये जो क्रॉप है, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय दिस फंगल जीनस, और ड्यू टू स्टारवेशन it leads to death of millions of people in Ireland. So it is related, this genus of fungus is related to this famous Irish potato famine. Next we will discuss about its Thallus structure. जो mycelium है इसका, that is coenocytic, aseptate होता है, hyaline है, colorless है, profusely branched होता है, mostly monopodial branching show करता है. सेप्टा बनते हैं इसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन एट मेच्योरिटी. जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं तभी इसमें सेप्टा फॉर्मेशन होता है. इसकी जो सेल वॉल है वो ग्लूकैन से बनी होती है, इसमें काइटिन एब्सेंट होता है. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, डिक्ट्योसोम्स, वैक्यूल्स, और कुछ एक ओयल ग्लोब्यूल्स दैट एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. दैन इट आल्सो जो इसके जो mycelium हैं, they are intracellular, means they grow within the cell and directly kills the invaded cell. Firstly they will kill the cell and after that they will get the nutrition. So in this picture we can see here, this is the cell, plant cell, and this is the fungal hyphae. It enter or penetrates inside the this plant cell with the help of this structure which is known as haustoria, that we'll discuss in upcoming slide. And this structure is responsible for the absorption of nutrients. So जो ये structure है जिसका नाम है haustorium, singular, haustoria is for plural. So इस structures की help से ये absorb करते हैं nutrition को plant cell के अंदर से. Some species of Phytopthora develop these absorbing structure which are known as haustoria. They helps in absorption of food material. जो haustoria की shape है Phytophthora infestans में, that is cylinder shape और finger like होता है, that we can see in this picture. So this is the magnified picture of this absorbing organ जिसका नाम है haustoria. ये absorb करता है nutrition जिस सेल के अंदर ये grow करता है. जो हॉस्टोरिया है ये ग्रो करता है एज अ लेटरल ग्रोथ फ्रॉम द मेन हाइफा. जो हाइफा होता है उससे, उसकी लेटरल ग्रोथ से बनता है, एंड इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द एडजॉइनिंग सेल एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. जो साइटोप्लाज्म है हॉस्टोरिया का, इट आल्सो कंटेन्स सम सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। जो फाइटोप्थोरा है ये प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज क्लामाइडोस्पोर्स। क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं थिक वॉल्ड स्पोर्स जो कि बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। व्हेन कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल तो ये थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से दीज आर रेस्टिंग स्पोर्स जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए बनते हैं। So these are formed under adverse environmental conditions in some species like Phytopthora cinnamon. इनमें थिक वॉल प्रेजेंट होती है और बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसकी शेप ऑब्लॉन्ग होती है और ये प्रोड्यूस होते हैं इंटर कैलोरी और टर्मिनल पोजीशन। अगर हम बात करें हाइफा है सपोज ये, इसमें या तो ये हाइफा के सेंटर में बनते हैं थिक वॉल स्पोर एंड दे कैन बी फॉर्म्ड टर्मिनली, मीन्स टिप्स से भी बनते हैं। स्पोर जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये क्लामाइडोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। द नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है स्पोरेंजिया। ये बनते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस और मोस्ट फ्रिक्वेंट जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दी स्पोरेंजिया। फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और मेन सोर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है मेनली इसी के थ्रू। ये पैरासाइट जो ये डिजीज़ कॉजिंग फंगस जीनस है मल्टीप्लाई करता है। इसमें जो टफ्ट्स ऑफ हैलाइन सिलेंडर्स ब्रांच्ड हाइफे होते हैं ये डेवलप करते हैं एपिडर्मिस के पास, लोअर एपिडर्मिस के पास, एंड pierce the stomata of lower epidermis। जो लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटा है उसके बाहर इसके जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो निकल आते हैं। इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर ये है हाइफा। दिस ब्लूइश कलर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर द हाइफे ऑफ दिस पैरासिटिक फंगल जीनस। ये पियर्स कर जाते हैं लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटास को और उसके बाहर जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं दीज आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर्स, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसके जो टिप्स में सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं दीज आर द स्पोरेंजियाज। ये स्पोरेंजिया बनते हैं। दे आर डेसिडियस इन नेचर, मीन्स दे गेट्स शेड डाउन और या विंड के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होते हैं। दैट विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड। जो हाइफे बाहर निकलते हैं इनको कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर, जो कि लोअर एपिडर्मिस के स्टोमेटास को पियर्स करके बाहर निकलते हैं। और हर स्पोरेंजियोफोर के टिप में प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम जिसके अंदर बनेंगे स्पोर्स जो कि जू स्पोर्स बनते हैं। ये बनते कैसे हैं स्पोरेंजिया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ हाइफा बिलो द स्पोरेंजियम इज शिफ्टेड टू द लेटरल पोजीशन दैट वी विल सी इन दिस पिक्चर। सो द प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड जो स्पोरेंजिया है वो वेरी करते हैं शेप में, कोई फिक्स शेप नहीं होती है इनकी। दे में बी लेमोनाइड शेप और ओवॉइड और एलिप्टिकल। जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है उसमें जो स्पोरेंजिया की शेप है दैट इज़ लेमोनाई फॉर्म, मीन्स लेमन शेप्ड होते हैं। इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं दे पियर्स दिस स्टोमेटा और बाहर निकल जाते हैं। जो इसके अंदर का मटेरियल दैट गेट्स ट्रांसफर टू द टिप्स और ये बल्ज आउट होता है एंड गिव राइज टू दिस स्वोलन स्ट्रक्चर। these are the developing stages of this sporangia। और इसके अंदर जो बहुत सारे न्यूक्लियस और बहुत सारा साइटोप्लाज्म इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है एंड फाइनली दे विल गिव राइज टू दिस लेमन शेप्ड स्पोरेंजिया। और ये जो डिवीजन होता है रिपीटेड होता है और जो ये स्पोरेंजिया इट गेट्स शिफ्टेड टू द लेटरल पोजीशन और इसके साथ ही एक नया हाइफा जनरेट होता है दैट विल आल्सो गिव राइज टू द यंग स्पोरेंजिया। सो मैच्योर जो स्पोरेंजिया है वो लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाता है, दैट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेटरल पोजीशन। सो द स्पोरेंजिया इसमें डेसिडियस होते हैं, मींस फॉल ऑफ गिर जाते हैं और डिसेमिनेटेड बाय वाटर और विंड और वाटर से ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में।
जहाँ से ये स्पोरेंजिया डिटैच होते हैं वहाँ पे एक इम्प्रेशन जैसा एक आउटग्रोथ सी बच जाती है, एक स्वेलिंग सा एक स्पॉट बचता है. सो दिस स्पॉट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस जीनस. जो ये फंगस है इसका एक यूनिक फीचर है ये. जैसे ही ये स्पोरेंजिया गिरते हैं ऑन suitable होस्ट, इट विल जर्मिनेट. और इसकी जो जर्मिनेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. वन इज़ मॉइस्चर, अदर इज़ टेम्परेचर. सो ये दो जो फैक्टर हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स जर्मिनेशन. अगर टेम्परेचर हाई होगा दैट इज़ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, सो जो स्पोरेंजिया है वो डायरेक्टली जर्मिनेट करता है बाय गिविंग राइज टू द जर्म ट्यूब. सो दिस स्पोरेंजिया विल जर्मिनेट डायरेक्टली बाय गिविंग राइज टू द जर्म ट्यूब व्हेन टेम्परेचर इज़ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. बट अगर टेम्परेचर लो है दैट इज़ 12 डिग्री सेल्सियस और जो मॉइस्चर है वो फेवर करता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन को. सो दो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर अगर कम है और मॉइस्चर ज़्यादा है, सो इनडायरेक्टली स्पोर जर्मिनेट करते हैं. सो दिस sporangia will behave as zoosporangium and it will form zoospores which are motile spores. So this is the sporangia. Under high temperature condition it will germinate directly and give rise to the germ tube. But जब टेम्परेचर कम होता है दैट इज़ 12 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल ग्रो लाइक दिस. इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस zoospores, motile spores, और ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा and will give rise to the new mycelium. So sporangia are susceptible to desiccation because they are very soft structures. They can be disintegrated by the harsh conditions. और अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा होगा 1 से 3 आवर्स तक और एयर ड्राई रहेगी एंड 5 to 15 आवर्स ऑफ मॉइस्ट एयर, सो इसकी जो वायबिलिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है जर्मिनेट करने की, इट विल लूज इस कैपेसिटी अंडर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन. नेक्स्ट, जर्मिनेशन दो तरह से जर्मिनेट करता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. वन इज़ डायरेक्ट जर्मिनेशन, अदर इज़ इनडायरेक्ट जर्मिनेशन. और दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं इसकी जर्मिनेशन. वन इज़ मॉइस्चर एंड अदर इज़ टेम्परेचर. So this is the picture which shows the germination processes. One is indirect germination. It means जो ये sporangium है it will behave as zoosporangium और इसके अंदर बनेंगे zoospores which are biflagellated kidney shaped zoospores. Direct germination, when temperature is high it will produce a germ tube and will germinate directly. So direct germination में जब टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा होगा up to 30 डिग्री सेल्सियस तो डायरेक्टली जर्मिनेट करेंगे ये जो sporangia है by developing this germ tube. So the germ tube क्या करेगी, enter करेगी fresh leaves में. Suppose this is leaf and this spore will fall on this leaf and it will germinate by producing this germ tube on this potato leaf and enter inside the leaf tissue by piercing the stomata. At the tip of this germ tube it will produce a structure which is known as aprisorium and it's club-shaped structure and it helps in penetration inside this epidermal layer. So this is the picture of germinating spore. ये जो picture है it shows this germ tube. जो ये sporangia है it germinate directly in when temperature is high. Next is indirect germination. जब temperature कम होता है और moisture ज़्यादा है then this sporangia will behave as zoosporangium and it will produce zoospores. Zoospores are the motile biflagellated spores. So protoplasm जो भी sporangium के अंदर है कट ऑफ हो जाता है small pieces में, uninucleate pieces में इन केस ऑफ Phytophthora infestans. और अगर हम बात करते हैं Phytophthora कोलोकेसिए जिसको कचालू कहा जाता है, उसमें ये प्रोड्यूस करता है 20 पीसेस ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म और हर एक जो पीस है पॉलीहेड्रल पीस दैट राउंड्स अप एंड विल गिव राइज टू दिस बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर.
In this picture we can see here, this is the स्पोरेंजिया, और ये जो स्पोरेंजिया के अंदर न्यूक्लियाई हैं, हर एक न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म सराउंड करेगा, एंड ईच पीस uninucleated piece of protoplasm gets metamorphosed into this biflagellated zoospore, और ये जो zoospore है it will settle down, इसके flagella shed हो जाएंगे, गिर जाएंगे, disintegrate हो जाएंगे, and it will germinate by giving rise to this germ tube and infect the fresh plant. So zoospores कैसे होते हैं? Kidney shape होते हैं, biflagellate हैं, and possesses flagella on lateral side that we can see in this picture. Of the two flagella, one is of whiplash type and other is of tinsel. Whiplash means smooth flagella and tinsel means having small branch-like structures or brush-like structure. Zoospores हैं, they are liberated by bursting this sporangial wall, and after swimming for some time they will come to rest and encyst by losing their flagella and germinate by giving this germ tube. Next, जो germ tube है, it adheres on the epidermis of the host and produces flattened organ, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको कहा जाता है aprisorium. So on this leaf surface it will produce an adhering structure which is known as aprisorium. जो germ tube है, this is zoospore, a resting zoospore, जो कि leaf के ऊपर settle down होगा, and it will produce this flattened structure that gets penetrated inside this epidermis. From the aprisorium, a fine tubular growth or peg-like growth like this one arises, and it is the infection hypha. It will enter inside this plant tissue and cause infection. So this is the same picture. So this is the germ tube, and at the tip of this germ tube it has a pressed structure which is known as aprisorium, a peg-like growth. It will enter inside this stomata and will cause infection and act as an infection hypha. It penetrates through the host tissue through stomata or epidermal cells, and after penetration it develops profusely branched mycelium like this one. So the mycelium is intracellular and develops haustoria in the host cell. Under favorable condition, numerous sporangiopores emerge out, and they looks like the whitish or cottony growth, जो कॉटन की तरह ग्रोथ होती है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ पोटैटो लीफ, वो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ स्पोरेंजियोफोर की तरह हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम दैट यू ऑलरेडी हैव सीन इन दिस दैट एनिमेशन इन द इनिशियल स्लाइड. एंड these sporangiopores comes out of the stomata and give rise to number of sporangia, और ये sporangia जो है favorable conditions में बनते हैं. They are disseminated by wind and water और infect करते हैं fresh plants को, और ये बनते हैं favorable conditions में. So this is the main method of multiplication by using this asexual method of reproduction in the growing season. Again same picture. Then next is sexual reproduction. Sexual reproduction Phytopthora में oogamous type होता है. It means जो female reproductive structure है that is larger in size and non-motile, and mode of reproduction is gametangial contact. So both of the gametangia comes in contact with each other like this one. This is antheridial branch, male branch, and this is the female branch. They comes in contact with each other. So this is known as gametangial contact. And this fungus is heterothallic. Heterothallic means there are different male and female branch, but there is no clear-cut distinction between male and female, so we use the term plus and minus strains. Plus and minus strain terms are used in case of fungi. जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको कहा जाता है एंथ्रीडिया और ओगोनिया रिस्पेक्टिवली. मीन्स मेल इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल इज ओगोनिया. इसकी अरेंजमेंट के बेस पे जो एंथ्रीडिया और ओगोनिया की डेवलपमेंट है उनकी अरेंजमेंट कैसे है उसके बेस पे फाइटोप्थोरा को हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में. फर्स्ट वन इज पैरागाइनस टाइप. इसमें जो एंथ्रीडिया है दैट रिमेन्स अटैच्ड टू द ओगोनिया ऑन लेटरल साइड. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फाइटोप्थोरा कैटोरम एंड फाइटोप्थोरा निकोशियानी.
जो एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट होती है दैट इज़ अर्लियर एज कम्पेयर टू द ओवोनियम, शोइंग कंडीशन विच इज़ नॉन एज प्रोटेंड्रस। मीन्स जो मेल ब्रांच है वो पहले डेवलप होती है, ग्रो करती है एज कम्पेयर टू द फीमेल वन, और इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन। इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई, दे डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूक्लियाई। आउट ऑफ these 12 nuclei, only one becomes mature and give rise to antheridium, और सारे के सारे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर, दिस द मेल ब्रांच, दिस द फीमेल ब्रांच। जो पहले डेवलपमेंट होती है वो होती है एंथ्रीडिया की। सो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं हम प्रोटेंड्रस कंडीशन। इसमें जो न्यूक्लियाई है इनिशियली 12 होते हैं पहले, और उसके बाद दे गेट्स डिसइंटीग्रेटेड एंड फाइनली ओनली वन न्यूक्लियाई becomes functional. This is known as antheridium at this stage. So this is one type, that is paragynous. Second is amphigynous type. इसमें जो antheridium होता है that remains as funnel shape collar like structure at the base of globose oogonium. So ये present होता है Phytophthora infestans में, जो हमने डिस्कस करना है। In this picture we can see here, इसमें जो ओगोनियम है वो पियर्स कर जाता है एंथ्रीडिया को, एंड इट एक्ट एज अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ ओगोनियम। नेक्स्ट इज एंथ्रीडियम। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एंथ्रीडियम के बारे में और ओगोनियम के बारे में। जो फाइटोफ्थोरा है इन्फेस्टेंस, उसमें एम्फीगाइनस टाइप अरेंजमेंट है। इट मीन्स जो एंथ्रीडिया है वो ओगोनियम के बेस में कॉलर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो मैच्योर एंथ्रीडियम इज फनल शेप्ड एंड फॉर्म्स अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ मैच्योर ओगोनियम, जो कि हमने इस पिक्चर में देखा है। इनिशियली डेवलपमेंट इस तरह से होती है। दिस इज एंथ्रीडियम एंड दिस इज ओगोनियम, एंड दिस एंथ्रीडियम विल फॉर्म अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ ओगोनियम। सो द 2 न्यूक्लियाई दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डिवाइड करेंगे 12 होंगे नंबर में, सभी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई बिकम्स फंक्शनल इन मैच्योर। ओगोनियम की बात करते हैं। इसकी जो डेवलपमेंट होती है लेटरल होती है और बिलो द एंथ्रीडियम हाइफा। ऑफ द स्ट्रेन, जो स्ट्रेन डिफरेंट है, एक प्लस स्ट्रेन एक माइनस स्ट्रेन। जो यंग ओगोनियम है वो पियर्स कर जाता है डेवलपिंग एंथ्रीडियम को, और इसकी टिप्स स्वेल कर जाती है एंड बिकम्स पियर शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर, ये ओगोनियल ब्रांच है, ये पियर्स कर जाती है एंथ्रीडियम को, और इसके बाद इसमें स्वेलिंग हो जाती है, and this antheridium will act as a collar-like structure. When young it is multinucleate, up to 40 nucleus present होते हैं, then cytoplasm present होता है। जब mature हो जाता है it becomes vacuolated. In this picture we can see here it becomes vacuolated, and gets differentiated into 2 layers: outer multinucleate periplasm and central uninucleate ooplasm. So इसमें differentiation हो जाती है। जो बाहर वाली लेयर है, जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज द सेपरेशन पॉइंट। जो बाहर वाला रीजन है इट बिकम्स पेरीप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएट होता है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो सेंट्रल पोर्शन है इट कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियाई एंड वैक्यूलेटेड, इसको कहा जाता है ओप्लाज्म। द न्यूक्लियस, जो ओप्लाज्म का न्यूक्लियस है डिवाइड करता है माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 न्यूक्लियाई। इसमें से एक न्यूक्लियस सर्वाइव करता है और दूसरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जो सर्वाइव करता है दैट बिहेव एज एन एग और oosphere nucleus. So in this picture we can see here this one survives, और ये दूसरा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एंड जो सर्वाइव करता है दैट न्यूक्लियस बिहेव्स एज द एग और oosphere nucleus. The mature oogonium becomes spherical or pear shaped and rest on the funnel shaped antheridium that we can see in this picture. Next is fertilization. Fertilization involves the fusion of male and female nuclei. इसमें प्लस और माइनस स्ट्रेन यूज़ करेंगे हम वर्ड। So ovonial wall bulges out at one point inside the antheridium and forms the receptive papilla. जो ओवोनियम की वॉल है वो एक रिसेप्टिव पैपिला बनाती है एंथ्रीडियम के अंदर। लेटर ऑन द वॉल ऑफ रिसेप्टिव पैपिला डिजॉल्व हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू द exchange of material or mixing of material, and the antheridium in turn will pushes a short fertilization tube towards the oogonium. जो antheridia है that produces a short tube like structure,
In this picture we can see here initially जो ओगोनियम है ये bulge out करता है to form this structure which is known as receptive papilla, and after that जो antheridia है that will produce this tube like structure which is known as the fertilization tube towards the oogonium, and through this tube it will send its nucleus to the oogonial cytoplasm. So it penetrates in the periplasm. Periplasm is the outer space and passes into the ooplasm, और pass कर जाता है ooplasm तक. इसकी जो tip है that opens and liberates male nucleus and some cytoplasm inside this ooplasm of the oogonium. जो मेल न्यूक्लियस है वो पास कर जाता है ओगोनियम के थ्रू, इस पेपिला के थ्रू, and brings about the process of fertilization that leads to formation of this diploid structure which is known as oospore. जब ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे that leads to formation of this structure which is known as oospore. So this is the fertilization process, how it occurs in case of Phytophthora infestans. The oospore may also develop parthenogenetically in some cases. Parthenogenetically means without fertilization, without the involvement of this male nucleus or nucleus of other strain. So that type of development is known as parthenogenesis. Next, oospore it is formed as a result of fertilization, और जो fertilization के बाद oospore बनता है ये secrete करता है इसके चारों तरफ thick wall and it undergoes the period of rest. ये डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं करता है. जो फ्यूजन है दो न्यूक्लियाई का इमीडिएटली नहीं होता, इट इज़ वेरी लेट एंड अकर्स इवन अनटिल आफ्टर द oospore वॉल्स आर लेट डाउन. जब तक oospore की वॉल्स नहीं बनती है उस टाइम तक ये फ्यूज नहीं करते हैं दोनों न्यूक्लियाई. सो दिस इज द थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर which is known as oospore. Immature oospore में क्या क्या चीज़ें होती हैं? It contains outer thick wall जिसको कहा जाता है exospore और inner thin wall जिसको कहा जाता है endospore. So in this picture we can see here जो ये thick wall black color की layer है, this is exospore, and this inner light colored layer is known as endospore. Exospore बना होता है pectic substances से, और जो एंडोस्पोर है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स. सो इनके जो वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लेयर के वो वेरी करते हैं एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ oospore. इट इज़ रेयर, वेरी रेयर फिनोमेनन विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन फ्यू स्पीशीज लाइक Phytophthora cactorum एंड Phytophthora palmivora. इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है oospore का that undergo meiosis and will give rise to the haploid nuclei, divide करते हैं and results in the formation of many nuclei in the oospore that we can see in this picture. जो nucleus है ये वाला it undergo meiosis होती है इसमें and it will give rise to number of haploid nuclei. और जो ये haploid nuclei हैं during the germination of this oospore they get shifted to the upper side of this germ tube like structure, और यहाँ पे ये फॉर्म करता है स्पोरेंजिया की तरह स्ट्रक्चर. जैसे एसेक्सुअल प्रोडक्शन में स्पोरेंजिया बनते हैं लेमन शेप, वैसे ही इसमें स्पोरेंजिया बनता है एंड दिस स्पोरेंजिया इज नॉन एज ज़ूस्पोरेंजियम बिकॉज इसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट गेट्स सराउंडेड बाय अ पीस ऑफ साइटोप्लाज्म, और हर एक जो पीस है दैट गेट्स मेटामॉर्फोस्ड इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स. सो ईच न्यूक्लियस जो इसके अंदर न्यूक्लियस है दैट इज सराउंडेड बाय मास ऑफ साइटोप्लाज्म and gets metamorphosed into the biflagellated zoospores. This is just similar to that of the asexual reproduction with the help of sporangia, जिसमें कि हमने पढ़ा था zoospores बनते हैं favorable conditions में, वैसे ही इसमें बनते हैं. और जो zoospore होता है that is biflagellate. इसमें जो एक flagella है that is tinsel shaped और दूसरा है whiplash type, and after some time it falls on suitable substratum. इसके जो flagella है लूज करता है, gets encysted and it germinate by producing germ tube on the substratum. So this is all about the germination of oospore. Is life cycle. So this is the pictorial presentation of life cycle of this Phytophthora infestans that we have discussed already. It reproduces asexually and sexually. Asexual reproduction जो होती है इसमें that is with the help of chlamydospores and zoospores, or we can say sporangia. So जो sporangia बनते हैं इसमें they are
लेमन शेप्ड, इसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस में इट विल एक्ट एज जूस्पोरेंजियम एंड गिव राइज टू द बायोफ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स. ये सेटल डाउन होते हैं फ्रेश प्लांट्स में एंड दे विल जर्मिनेट and infect the fresh plant surface. During sexual reproduction, दो opposite strain के हाइफा प्रोड्यूस करते हैं गैमेटेंजिया and they comes in contact with each other. So गैमेटेंजियल contact होता है sexual reproduction में. Phytophthora infestans के केस में जो arrangement है गैमेटेंजिया की, that is amphigynous type. So antheridia will behave as a collar-like structure and it will जो oogonia, that is globule structure, इसके बेस में present होता है antheridia, and it leads to the fusion of male and female nuclei. उसके रिजल्ट से इसमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं oospore. oospore की जर्मिनेशन रेयर होती है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन सम स्पीशीज. बिफोर जर्मिनेशन इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज इनिशियली डिप्लॉयड, इट अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जिसमें कि रिपीटेड डिवीजन होता है, बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं. इट जर्मिनेट टू गिव राइज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर का जो मटेरियल है दैट गेट शिफ्टेड टू दिस ट्यूब, और इसके टिप स्वेल अप हो जाती है एंड गिव राइज टू लेमन शेप्ड स्ट्रक्चर एज इन केस ऑफ asexual production, that is zoosporangium. And next, the process is similar. So this is all about the life cycle of this disease causing genus of fungus, that is Phytophthora infestans. इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एक फंजीसाइड यूज़ करते हैं लाइक डायथेन, and we also destroy the disease plant. So this is all about the Phytophthora infestans. If you have any questions and queries, you can ask in the comment section and you can suggest me some improvements to improve myself. Thank you. Have a nice day. Thank you.